1. Resurgence, noun. قوة بخشي نيرو حياتنا. An increase or revival after a period of little activity, popularity, or occurrence. 2. Flawed, adjective. غلط خراب ناقص. Having or characterized by a fundamental weakness or imperfection. 3. Appeasement, noun. ढارس تمانية رف. The action or process of appeasing. 4. Truce, noun. وقفة التواء جن عزي سلاكة معاهدة. An agreement between enemies or opponents to stop fighting or arguing for a certain time. 5. Auspices. تحفظ سرپرستی. With the help and support of a particular person or organization. 6. Escalation, noun. बढ़ावा तेजी शिद्दत बढ़ाना. A rapid increase, a rise. 7. Ferocity, noun. غيظ وغضب تيش سندلي وحشي. The state or quality of being ferocious. 8. Scarce, adjective. ناكافي قليل المقدار كمي. Especially of food, money, or some other resource, insufficient for the demand. 9. Sanctuary, noun. पना पाक जगह माबद इबादतगाह. Refuge or safety from pursuit, persecution, or other danger. 10. Stance, noun. موقف حالت كيفية نقطة نظر. The way in which someone stands, especially when deliberately adopted, as in cricket, golf, and other sports, a person's posture. 11. Widen, verb. चौड़ा होना कुशादा करने का अमल. Make or become wider. 12. Sovereignty, noun. इक़्तिदार हुकूमत राज. Supreme power or authority. 13. Predicament, noun. बुरी हालत खतरनाक सूरत हाल. A difficult, unpleasant, or embarrassing situation. 14. Coherent, adjective. معقول منطقي تسلسل. Of an argument, theory, or policy, logical and consistent. Reviewing CT strategy. Zahid Hussain. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 4, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. There was nothing in the communiqué issued after the latest National Security Committee meeting that we have not heard before. Phrases like zero tolerance for terrorism and violence will be dealt with the full force of the state are mere clichés in the absence of a comprehensive national security policy. A statement issued after the two recent marathon sessions of the NSC declared, Pakistan's security is uncompromisable and the full writ of the state will be maintained on every inch of Pakistan's territory. It also stated that no country would be allowed to provide sanctuaries and facilitation to terrorists and that Pakistan reserves all rights in that respect to safeguard her people. Significantly, the first NSC meeting after the change of guard in the army took place in the midst of a wave of terrorism that has been sweeping across the strategically located northwestern and western parts of the country. The resurgence of violent militancy over the last several months has ended the relative calm witnessed after years of military operations in the region. Scores of security personnel lost their lives in terrorist attacks last year. Indeed, the statements seem to reflect the gravity of the situation, but our resolve to fight terrorism in all its aspects is still being tested. The latest spike in terrorism may have been a wake-up call, but there seems to be no clear strategy in place yet to deal with the existential threat. We cannot effectively counter violent militancy with ill-equipped civilian forces. It is evident that the return of Taliban rule in Afghanistan has given a huge impetus to terrorist groups operating out of their sanctuaries across the border. It is also true that the current wave of terrorism has its roots in Afghanistan. But it was our flawed policy that allowed the TTP to regain its lost space in the former tribal areas.
We pursued a policy of appeasement towards the outlawed group, despite a massive surge in terrorist attacks in North Waziristan and other districts of KP, mainly targeting the security forces. We had engaged in so-called peace negotiations with the TTP on the insistence of the Afghan Taliban administration. Pakistan also agreed to a ceasefire, which allowed the TTP to regroup and reorganize inside Pakistani territory. It was evident that the militants used the tentative truce to their advantage. In fact, the state agreed to peace negotiations on the TTP's terms. The militants not only refused to surrender their arms but also laid out preconditions, including the reversal of the former tribal region's merger with the mainland and the withdrawal of Pakistani security forces from the area. The negotiations, which took place in Kabul under the auspices of the Afghan Taliban administration, were led by senior Pakistani officials. After a start-stop dialogue process spanning several months, the TTP appeared politically stronger and emboldened. There has been a marked escalation in TTP attacks on Pakistani forces since then. Despite the surge in terrorist attacks, the state allowed hundreds of militants to return to their homes in Swat and other districts of KP. Most of them had fled to Afghanistan after the military operation in 2009. The resurgence of the dreaded militant network in Swat was the consequence of a deal. Last year, the government had freed Muslim Khan and another top TTP commander, who were the main leaders of the Swat insurgency. They were responsible for the killing of hundreds of civilians and government officials and were held under anti-terrorism laws. Their release, though not really made public, gives credence to reports of the state taking a softer approach towards some of the militant factions considered reconcilable. This policy of appeasement has cost us dearly. The civil and military leadership has now vowed to take action against all militant groups, without any discrimination, but it will be hard to reverse the effects of past policy debacles. Kinetic military action may be necessary, but this is not a long-term solution to an extremely complex problem. The main emphasis still seems to be on firefighting rather than getting to the root of the matter. It requires a complete reassessment of our counter-terrorism strategy that has so far failed to achieve its objective. The very fact that the specter of terrorism has raised its ugly head yet again, with all its ferocity, raises many questions about our flawed approach to fighting violent militancy and extremism. Recent militant attacks in KP have exposed the poor capacity of our civilian law enforcement agencies to deal with the rising terrorist threat. The Provincial Counter-Terrorism Department, with its scarce resources, is hardly capable of countering a well-trained and well-equipped militant force. The police that are on the front line have borne the brunt of the recent terrorist attacks in KP. We cannot effectively counter violent militancy with ill-equipped civilian forces. Islamabad has also warned of taking the battle against terrorism across the border if the Afghan Taliban administration continues to provide sanctuary to the TTP and other outlawed militant groups involved in militant activities inside Pakistan. The Afghan Taliban administration has strongly reacted to Islamabad's warning, denying that the militants were using Afghan soil for cross-border attacks. Notwithstanding the Afghan Taliban administration's stance, it is evident that thousands of TTP militants are still being sheltered by the conservative Islamic regime. Indeed, Pakistan needs to act to contain the rising militancy emanating from Afghanistan, but it should also be careful not to widen the theater of war to beyond its borders. The NSC meeting has rightly pointed out the importance of economic stability to national security. Surely, as the statement said, comprehensive national security revolves around economic security and sovereignty or dignity comes under stress without self-sufficiency and economic independence. Yet, there seems to be no clear plan to prevent the impending financial collapse. Moreover, worsening political instability has compounded our security predicament. A divided nation and a highly polarized society make it harder to evolve a coherent and holistic national security policy. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, January 4, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning.
कौमी सलामती कमेटी के ताज़ा तरीन इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने पहले नहीं सुना हो। दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस और तशद्दुद से रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा जैसे जुमले एक जामे कौमी सलामती पॉलिसी की अदम मौजूदगी में महज कलच हैं। कौमी सलामती काउंसिल के 2 हालिया मैराथन इजलासों के बाद जारी होने वाले एक बयान में ऐलान किया गया है, पाकिस्तान की सलामती नाकाबिल तलाफी है और पाकिस्तान की सरजमीन के हर इंच पर रियासत की मुकम्मल रख बरकरार रखी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलत फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान अपने लोगों की हिफाजत के लिए इस सिलसिले में तमाम हुकूक महफूज रखता है। काबिल जिक्र बात यह है कि फौज में गार्ड की तब्दीली के बाद NSC का पहला इजलास दहशतगर्दी की लहर के दरमियान हुआ जो मुल्क के स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़े शुमाल मगरबी और मगरबी हिस्सों में फैल रहा है। गुज़िश्ता कई माह के दौरान पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी के दोबारा उभरने से खित्ते में बरसों की फौजी कार्रवाइयों के बाद निस्बतन पुरसुकून माहौल ख़त्म हो गया है। गुज़िश्ता साल दहशतगर्द हमलों में मुताद्दिद सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। यकीनन ये बयान सूरत हाल की संगीनी की अक्कासी करता दिखाई देता है, लेकिन दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं से लड़ने के हमारे अज़्म को अब भी आजमाया जा रहा है। दहशतगर्दी में ताज़ा तरीन इजाफा एक वीक अबकाल हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वजूद के खतरे से निमटने के लिए अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। हम पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी का मुअस्सिर तरीक़े से मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके लिए सिविलियन फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी की वापसी ने सरहद पार अपनी पनागाहों से काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों को एक बहुत बड़ा हौसला दिया है। ये भी सच है कि दहशतगर्दी की मौजूदा लहर की जड़ें अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन यह हमारी नाकिस पॉलिसी थी जिसने TTP को साबिका कबायली इलाकों में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने का मौका फराहम किया। शुमाली वज़ीरिस्तान और KP के दीगर अज़ला में दहशतगर्द हमलों में बड़े पैमाने पर इजाफे के बावजूद हमने कालादम ग्रुप के खिलाफ खुशामद की पॉलिसी पर अमल किया जिसमें बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। हम अफ़गान तालिबान इंतज़ामिया के इसरार पर TTP के साथ नाम निहाद अमन मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे। पाकिस्तान में जंगबंदी पर भी इत्तेफाक किया, जिसने TTP को पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर दोबारा मुनज़्ज़म होने और दोबारा मुनज़्ज़म होने की इजाज़त दी। ये वाज़ेह था कि अस्करियत पसंदों ने आर्ज़ी जंगबंदी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। दर हकीकत रियासत ने TTP की शराइत पर अमन मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। अस्करियत पसंदों ने न सिर्फ हथियार डालने से इनकार कर दिया बल्कि साबिक कबायली इलाके के मैनलैंड के साथ इंज़माम को तब्दील करने और इलाके से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के इनखला समेत पेशगी शराइत भी रखी। अफ़गान तालिबान इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम काबुल में होने वाले मुज़ाकरात की क़ियादत सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम ने की। कई माह तक जारी रहने वाले मुज़ाकराती अमल के बाद TTP सियासी तौर पर मजबूत और हौसला अफजा दिखाई दी। इसके बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस पर TTP के हमलों में नुमायां इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी के हमलों में इजाफे के बावजूद रियासत ने सैकड़ों अस्करियत पसंदों को सवात और KP के दीगर अज़ला में अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दी। इनमें से ज़्यादातर 2009 में फौजी ऑपरेशन के बाद अफ़गानिस्तान फरार हो गए थे। सवात में खतरनाक अस्करियत पसंद नेटवर्क का दोबारा उभरना एक मुआहदे का नतीजा था। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने मुस्लिम खान और TTP के एक और आला कमांडर को रहा कर दिया था, जो सवात की शोरिश के अहम रहनुमा थे। वो सैकड़ों शहरियों और सरकारी एहलकारों के कत्ल के जिम्मेदार थे और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई, अगरचे हकीकत में अवामी नहीं की गई है, इन इत्तलात को तक़वियत देती है कि रियासत ने कुछ अस्करियत पसंद धड़ों के बारे में नर्म रवैया इख्तियार किया है जो मुसालहत के काबिल समझे जाते हैं। खुशामद की इस पॉलिसी की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सिविल और फौजी क़ियादत ने अब इस अज़्म का इजहार किया है कि वो तमाम अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेगी, लेकिन माजी की पॉलिसी नाकामियों के असरात को तब्दील करना मुश्किल होगा। मुतहर्रिक फौजी कार्रवाई ज़रूरी हो सकती है, लेकिन ये एक इंतहाई पेचीदा मसले का तवील मुद्दती हल नहीं है। ऐसा लगता है कि असल जोर अब भी मामले की जड़ तक पहुंचने के बजाय फायर फाइटिंग पर है।
इसके लिए हमारी इंसदा दहशतगर्दी की हिकमत अमली का मुकम्मल असर-ए-नौ जायजा लेने की ज़रूरत है, जो अब तक अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रही है। हकीकत यह है कि दहशतगर्दी के भूत ने एक बार फिर अपनी पूरी वहशत के साथ अपना बदसूरत सर उठा लिया है। पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए हमारे नाकिस नुक्ता नज़र के बारे में बहुत से सवालात उठाता है। केपी में हालिया अस्करियत पसंदों के हमलों ने दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए हमारे सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकिस सलाहियत को बेनकाब कर दिया है। सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा अपने नायाब वसाइल के साथ एक अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता और अच्छी तरह से लैस अस्करियत पसंद फोर्स का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुलिस को केपी में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी का मुअस्सिर तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके लिए सिविलियन फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद ने यह भी मुतनब्बे किया है कि अगर अफगान तालिबान इंतजामिया ने पाकिस्तान के अंदर अस्करियत पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस टीटीपी और दीगर कालादम अस्करियत पसंद गिरोहों को पनागाहें फराहम करना जारी रखा तो वो सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अफगान तालिबान इंतजामिया ने इस्लामाबाद के इंतबा पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए इस बात की तरदीद की है कि अस्करियत पसंद सरहद पार हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान इंतजामिया के मौक़िफ़ के बावजूद ये बात वाज़ेह है कि टीटीपी के हज़ारों अस्करियत पसंदों को अब भी क़दामत पसंद इस्लामी हुकूमत पनाह दे रही है। बिलाशुबा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पैदा होने वाली बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है, लेकिन इसे ये भी मोहतात रहना चाहिए कि जंग के थिएटर को अपनी सरहदों से बाहर तक वसी न किया जाए। कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में कौमी सलामती के लिए माशी इस्तेहकाम की अहमियत की दुरुस्त निशानदेही की गई है। यकीनी तौर पर, जैसा कि बयान में कहा गया है, जामे कौमी सलामती इक्तिसादी सलामती के अर्द गिर्द घूमती है और खुद मुख्तारी या वकार खुद कफालत और मुआशी आज़ादी के बगैर दबाव में आता है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि आने वाले माली खात्मे को रोकने के लिए कोई वाज़े मंसूबा नहीं है। मज़ीद बड़ा बिगड़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम ने हमारी सलामती की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। एक मुनक़सम कौम और इंतहाई पुरराज़ मुआशरा एक मरबूत और जामे कौमी सलामती की पॉलिसी तैयार करना मुश्किल बना देता है। मज़मून निगार एक मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। डान अखबार में शाये शुदा 4 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.